Hi everyone, I think we should start now. People will keep joining. Okay, so सबसे पहले this class will be bilingual. थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, थोड़ी अंग्रेजी में बात करूंगा. जो भी मैं बातें करूंगा वो आपको पीपीटी में दिख रहा होगा. पीपीटी दिख रहा है? एक बार मैसेज कीजिए, यस मैसेज कीजिए. If you are able to visit my PPT. Okay, all right. Thank you. Okay. So थोड़ी चीजें मैं आपको इस क्लास के बारे में बता देना चाहता हूँ कि what this class is all about and what we shall learn in this class and of course how that will help you, right? So these are 2-3 points. So very first thing, जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, this is the discussion of DGMS managers first class and second class last year management asked questions. वैसे questions जो DGMS ने अपने एग्जाम में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में पूछ रखा है, वही सारे क्वेश्चंस बस इसमें, ठीक है. आंसर्स आर आल्सो अनडिस्प्यूटेड, कोई डाउट नहीं आंसर में. क्यों? क्योंकि आंसर जो मैंने यूज किया है वो डीजीएमएस के ऑफिशियल की का आंसर है. हालांकि कहीं पे थोड़ी भी अगर वेरिएशन आती है तो आई शैल डिस्कस दैट इन माय क्लास, बट अभी जो आंसर सारे यूज किए हुए हैं वो सारे डीजीएमएस के आंसर्स यूज किए हुए हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, ये मैनेजमेंट का कोई फॉर्मल क्लास नहीं है कि मैं एक टॉपिक को एक एक करके धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा. बट वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि किसी एक फॉर्मल मैनेजमेंट के क्लास में जितना आप सीखेंगे उससे बहुत ज्यादा यू शैल लर्न इन दिस क्लास. ओके, दिस यू विल ऑफ कोर्स सी इन नेक्स्ट 2-3 minutes. Okay, so these are the basic things. We shall not entertain question here. If you have any question, you can ask in WhatsApp group. Lots of faculties are there. Of course, जो आपके डाउट को क्लियर करेंगे. तो यहाँ पे हम ज्यादा क्वेश्चंस को entertain नहीं करेंगे. अदरवाइज क्या होगा कि हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लास्ट 3-4 years 2015, 2020, 2021 DGMS ने कुल मिलाकर के फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लेजिस्लेशन पेपर में ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन पूछे हैं. टू बी वेरी प्रिसाइज, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 107. जो सारे एग्जाम मिला करके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और जो 3 साल के एग्जाम हुए हैं ऑब्जेक्टिव आने के बाद, उसका मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है. तो क्वेश्चंस तो 107-8 होंगे, बट जो मेजर टॉपिक्स हैं दैट इज ओनली 30-40. और इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं कि पूरे मैनेजमेंट के सिलेबस की जब आप बात करते हैं तो देयर आर मैक्सिमम 50 टॉपिक्स. उन 50 टॉपिक्स के लिए आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं. जस्ट आपको कीवर्ड पहचानना है उस पार्टिकुलर टॉपिक का. उस कीवर्ड को अगर आपने याद कर लिया तो आपका मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यू जस्ट नीड 7 days, 2 hours per day. Okay, so means whole management you can cover, you can memorize, you can understand in not more than 15 hours. That is too much. I am talking in perspective of the quality of questions which DGMS ask, the variety of topics they cover. ठीक है? Okay, so we shall start now. So of course you can see the first slide. All right, so this way I have distributed everything. So this is topic number 1, the payback period. Okay, of course, what pattern I shall follow? I'll first tell you the brief about that topic. Okay, then I'll put up the question. Then after the question, you have to write the answers in the chat box. Okay, I have opened the chat box on my screen, so of course I can see everyone answering there. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना है. Then of course I shall analyze, I shall appreciate also if you answer it correctly. तो of course मैं आपको अच्छा बताऊंगा, आपने बहुत बढ़िया किया. तो आपको सीखना है और आपको यही का यही सीख करके यही के यही क्वेश्चन देके अपने टॉपिक को खत्म कर लेना है. बाद में सिर्फ रिवाइज करने के लिए रखना है. Alright, so we start with the first topic. The first topic is payback period. See, first you can read what I have written on the screen. The payback period method evaluates. See, छोटा छोटा मैंने पॉइंट बनाया है. छोटा छोटा पॉइंट इसलिए बनाया है ताकि मैं कीवर्ड को हाईलाइट करूंगा. उसी कीवर्ड को आपको याद रखना है.
The payback method evaluates how long it will take to pay back. Okay, how long it will take to pay back. अब payback को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, व्हाट इज payback? किसी चीज को आपने लिया, किसी से लिया, और उसको जब आप पे कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो बेसिकली दैट इज payback. प्लीज इस तरह का जो एनोटेशन लगा रहे हैं ना, प्लीज मत लगाइए. That will simply irritate us, all of us. Okay, so the payback method evaluates how long it will take to pay back. What to pay back? To recover the initial investment. To recover the initial investment. इसका मतलब कि आपने जो पैसे लगाए किसी भी बिजनेस में, वो आपको कितने समय में वापस मिल जाएगा. सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी खरीदी, मैन पावर डिप्लॉय किया, आपने कुछ रेंट पे लिया तो रेंट पे किया, इस तरीके से मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए, यू हैव इन्वेस्टेड 1 करोड़ रुपीस. Then payback method will simply tell you how much time will it take you to get that 1 crore investment. Okay, so this is typically stated in years. Yes, my project will take 7 years to pay back me. My project will take 5 years to pay back me, or 3 years to pay back me. Okay, so it is the time it takes to generate enough cash receipt from an investment to cover the cash outflows for the investment. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये सारी चीजें अंग्रेजी में आपकी लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल सा, मैं चाह रहा, मेरा what's my objective? My objective is to memorize these topics here on. All right, so payback is basically stated in years, and this is the amount of years in which your investment will be paid back to you. Clear? ये पीपीटी में मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप पीपीटी भी देख सकते हैं. तो इसके बारे में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि पीपीटी आपको अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. ऑलराइट, अब पेबैक पीरियड का सिंपल से ही फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड फॉर्मूला इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने 1 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट किया, सो दैट इज बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोज. व्हाट इज कैश इनफ्लोज? जो आपको अपने प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे, जो आपके बिजनेस से आपको पैसे आएंगे. सो कैश इनफ्लो इज बेसिकली द अमाउंट यू गेट फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस फ्रॉम योर बिजनेस. आपने कुछ, मान लो आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने मान लो माइनिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू शैल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज, यू शैल स्टार्ट जनरेटिंग कैश इनफ्लोज. सो दिस फॉर्मूला इज सिंपल. Payback period is equal to initial investment divided by cash inflows. Okay, अब एक सिंगल लाइन में मैं आपको बोलूं तो payback period is equal to कि आपने कितना पैसा लगाया और कितने समय में वो आपको वापस आ जाए. This is basically payback period. Okay, as simple as that. Okay, so this is the question which DGMS asked. So please write the answer in the comment box. What is payback method? A, the payback method of a project is to recover all investment in 2 years time. The payback method is a method of evaluating a project by measuring the time it will take to recover the initial investment. Option C, the payback method of project is to recover all investment in 7 years time. Option D is 10 years time, and option E is 5 years time. Okay, so please write your answer. All right, a lot of people have answered, and in fact everyone is correct, so well done. Of course this question was very easy, but of course इसी तरह के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, तो that's not a big deal. This question is easy, but all of you have answered correctly. Thank you. Okay, so answer is B. So this topic must be clear. Okay, आपको याद रखना है, सिर्फ छोटी सी चीजें आपको याद रखनी होती है. पेबैक पीरियड कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने किसी प्रोजेक्ट में लगाया वो मुझे कितने ईयर्स में वापस आ जाए. आंसर इज बी. व्हाई आंसर इज बी? क्योंकि कहीं भी स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा हुआ था, कहीं भी हमने स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा था कि आपको 1 साल लगना है, 2 साल लगना है. तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी, ये 2 years टाइम, 7 years टाइम, 10 years टाइम, ये सब कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है. तो ऑफ कोर्स आंसर इज बी. ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक. आई थिंक ठीक है. So this is the second topic.
This is the second topic, enterprise resource planning. Okay, this is the second topic, enterprise resource planning. Now फिर से इस टॉपिक में try to understand the very basic concept. एकदम छोटा सा एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, पेबैक पीरियड. अभी भी आपको याद होगा पेबैक पीरियड क्या था, कितने समय में इन्वेस्टमेंट वापस आएगा, बस इतना याद रखना है. उसी तरीके से इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को भी हम उसी तरीके से समझेंगे. ओके, enterprise resource planning refers to first, it is a type of software. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए. तो 5 ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन, तो अगर आपने सिर्फ ये याद रखा ना कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी के सॉफ्टवेयर, तो 3 ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे. ऑब्जेक्टिव का एग्जाम, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सिर्फ सही जवाब जानना जरूरी नहीं है, आपको गलत जो ऑप्शन है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. अगर 5 ऑप्शन में आपको दिख गया कि 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग, देन you can easily eliminate all those 3 options. Okay, so after that you will be left with only 2 options for a particular question. अगर आपने सही नहीं आंसर भी जानते हैं, but still if you attempted, then आपके सही होने के चांसेस कितने हो गए, 50%. Okay, so always remember in any objective type exam it is equally important to eliminate the wrong answers and to select the right answer. Okay, so हमेशा याद रखना. So enterprise resource planning is a type of software that organization uses, okay, so used by organizations to manage day-to-day business activities. Very, very important. This is a type of software that is used to manage business activities, not other activities, only business activities. So suppose कीजिए आपको यहाँ पे HR activities लिख दिया गया या IT activities लिख दिया गया, तो वो सारे options क्या होंगे, those options will be wrong. So इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया सॉफ्टवेयर. नंबर 2, इट इज टू मैनेज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज. दिस इज सेकंड पॉइंट. एंड फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज, अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड compliances, and of course supply chain operations. Okay, so these all are the benefits of ERP. ERP is a type of software. It is used to manage business activities, and all these are business activities. So आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर और बिजनेस एक्टिविटी आप याद रखोगे, ERP का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, नेवर. Okay, so this is the image you can see. ERP, ये पूरा ERP के अंदर क्या क्या है, what all are included, inventory is included, services are included, sales are included, human resource management of human resource is also a big task. Human resource are included, purchasing are included, CRM, MNP, financials, products, so everything. So what, of course I have already told you there that ERP is a type of software that is used to manage day-to-day business activities. Okay, I have already told you na, day-to-day business activities, right? So this is all about ERP. This is all about ERP. See, this is also a diagram. देखिए, आप ना कभी भी किसी भी टॉपिक को, इनफैक्ट खासकर मैनेजमेंट के टॉपिक को या वर्किंग में, अगर आप वर्किंग की तैयारी करते हैं, तो आपको ना हमेशा याद रखना है कि इमेजेस क्रिएट्स अ लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी इफेक्ट देन टेक्स्ट. तो आप चीजों को अगर आप इमेज में आपने देख लिया ना, फॉर एग्जांपल मान लो आप हॉल रोड के बारे में पढ़ रहे हो, या मान लो कि आप टेक 5 के बारे में पढ़ रहे हो, ट्रैप के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप जनरल सेफ्टी की मैं बात करूं, तो इफ यू आर रीडिंग अबाउट ऑल दोस टॉपिक्स, ट्राई टू सी 1-2 images related to that topic, because that will simply increase your memory power. Okay, so once again enterprise resource planning, I have already told you that supply chain management, manufacturing, internet of things, project management, all those things are there. Okay, I'll share the slides so you can see the slide also. So come to the question of ERP, and this is the question. Please write there. What is enterprise resource planning? Business management software that a company can use to collect royalty from business activities. Business management software that a company can use to collect, store, manage, and interpret data from many business activities. Then business management software that a company can use to collect cess. Okay, so all those options are there. Write the answer. Read carefully, take your time, read carefully, and then write the answer.
All right, lot of people have answered. Let's see what is the answer. Please don't annotate. Who all are annotating there? Means who all are drawing lines there? Please don't do that. All right, so answer is B. Lot of people have answered. Who has written this all correct? Sasi? No, that's wrong. Of course wrong. Lot of people have answered E. Like Ankit, you have answered E. Then Vinay, you have answered E. Sudeep have answered E. Ramanus have answered E. See, आपको इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कि आंसर E क्यों नहीं था. मैंने क्या बोला आपको कि आपका सिर्फ आंसर, करेक्ट आंसर को पता करना और रॉन्ग आंसर्स को पता करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, मैं फिर से एक बार ना जो पढ़ाया वापस स्लाइड के ऊपर जाता हूं. ये देखिए मैंने क्या लिखा था. Enterprise resource planning refers to type of software that organization uses to manage day-to-day business activities. उसके बाद मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई जिसमें सारी चीजें थी. नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया कि ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, सारी चीजें थी. उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिया. अब आप देखो, अगर आपको सही आंसर नहीं पता था तो एटलीस्ट कुछ गलत आंसर तो आप निकाल सकते थे. बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ए कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट रॉयल्टी. देखो अब किसी ने लिखा ऑल आर करेक्ट. देखो ऑल आर करेक्ट तो सही है कि ईआरपी सब हर चीजों को मैनेज करता है, लेकिन आपको इन पांचों में से ऑल ऑफ दीज का आंसर नहीं है. तो यू हैव टू चूज ओनली वन आंसर एंड दैट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, राइट. सो बिजनेस सॉफ्टवेयर, मैंने ईआरपी के बारे में कहीं भी स्पेसिफिकली रॉयल्टी के बारे में बात नहीं करी. दैट ए कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज, इंटरप्रेट डाटा from many business data from many. अब यहाँ पे देखो वर्ड, देखो this word is very very important many, क्योंकि आपको पता था ERP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को कर रहा है. इस ऑप्शन में रॉयल्टी देकर के स्पेसिफिक बना दिया गया, सेस देकर के स्पेसिफिक बना दिया गया, पे सैलरी देकर के स्पेसिफिक बना दिया गया और डेवलप सॉफ्टवेयर देकर के स्पेसिफिक बना दिया गया. तो सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़ करके जो A C D E है, they all are talking about only one specific point and not all the point. Whereas what I have told you regarding ERP, that ERP manages every operations, right? So अगर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होता तो आप ये चारों ऑप्शन को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे कि these options talk about specific thing, whereas ERP talks about the general nature of business, all the activities of the business. Correct? So of course answer was B. Come to the next topic. Topic number 3, inventory management. फिर से मैं आपको वापस बता रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट को आपको याद करना है. Inventory management refers to the process of ordering, storing, using and selling a company's inventory. किसी भी कंपनी की जितने भी इन्वेंटरीज है उनके पूरे प्रोसेस को, द होल प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग. दिस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. अब मैंने क्या बोला, क्या ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कंपनीज इन्वेंटरी. नाउ यू मस्ट नो व्हाट आर इन्वेंटरीज. सो इन्वेंटरीज आर रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच आइटम्स. क्योंकि मैं अगर आप पूरा ऑप्शन देखें तो दिस इंक्लूड्स ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग of what? Of company's inventory. What are the inventories? Inventories are raw material, components and finished goods. Okay, inventory management helps companies to identify which and how much stock to order at what time. Which and how much stock to order at what time. किस समय पे कितना ऑर्डर क्या करना है. It tracks inventory from purchase to sale of goods and identifies and responds to ensure there is always enough stock. There is always enough stock to fulfill orders with prior warning of any shortage. Prior warning of any shortage. See, किसी भी बिजनेस के लिए ना inventory management is very very important. क्यों? You always want कि आप ना तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अपने पास रखो और ना ही कम इन्वेंट्री अपने पास रखो. कम इन्वेंट्री रखने से लॉस क्या है? कम इन्वेंट्री रखने से लॉस ये है कि अगर आपको किसी चीज की सडन जरूरत पड़ गई, आपको पता है कि इन्वेंट्री आने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे. अगर आप मान लो कि किसी मशीन का एक छोटा सा कोई पार्ट, उस पार्ट का आप ना इन्वेंट्री नहीं रखो, आपने नहीं रखा है. अब आपको
उस इन्वेंट्री को मंगाने के लिए, उस पार्ट को मंगाने के लिए 2 दिन लग गए, 2 दिन तक आपका मशीन काम नहीं कर पाएगा. So that's basically what? That's basically hampering the efficiency and productivity of that machine. But मान लो आप चाहते हो कि यार मतलब पिछली बार ना टाइम पे पार्ट नहीं मिला था, 2 दिन तक मशीन बंद रह गया था. This time what I will do, I will purchase 4 of such items. उस एक पार्ट का 4 पीस मैं अपने पास रखूंगा. But that is also not advisable. Why they are not advisable? Because that will simply cost you money. एक तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे, एंड दूसरी चीज कि आपको उसको रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उसका देखभाल करने के लिए भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ेगा. इसका मतलब है कि यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं. और इन सारी चीजों को करने के लिए क्या है आपके पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है. व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इज इट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? नो, इट इज द प्रोसेस, द होल प्रोसेस. ओके. So this is the standard definition of inventory management: the process of ordering, storing, using and selling the company's raw material, components and finished products. What are the 5 benefits of inventory management? So I have enumerated all these benefits. It keeps track of your inventory and offers a centralized view of stock. Controls your cost by making controls your cost. मैंने क्या बोला? Cost is also very important. बहुत ज्यादा करके नहीं रख सकते हम. And making stock reports for analysis of your inventory. It improves your order by managing stock outs and meeting customer expectations. Very, very important. Manages planning and forecasting by analyzing data trends. That is also important. And then it reduces the time for managing inventory by keeping records in place. Okay. So मैं फिर वापस बता रहा हूँ, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो. बट दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड. प्लीज आंसर द क्वेश्चन. Okay, answer the question, then I'll explain what is the meaning of keyword in the question. First of all, write the answer for this question. Read the question very carefully and then write your answers. Define inventory management. It is a process in which every company builds up large quantity of spares for their use. It is a process in which each company manufactures large number of spares for their use. It is a process in which each company manufactures large quantity of spares for marketing. It is the process of ensuring that a company always has the required spares it need on hand and keeps low stock, which in turn result in a low cost as possible. It is a process of ensuring that each company always has required spares which it needs by establishing manufacturing unit itself and also supplies to others. Okay, lot of people have answered D. Some has answered E also. And then who has answered F? Great. So there is of course no F, right? Okay, most of the people have answered D. So let's move ahead and see what is the answer. Answer is D. Okay, बहुत आसान क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ही आसान क्वेश्चन था. अगर आप देखो ये जो लार्ज लिखा हुआ है ना, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही है. ऑप्टिमम इन्वेंटरी मेंटेन करना है आपको. नाउ आपको अगर बात करें तो लार्ज क्वांटिटी जैसे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन कट गया, लार्ज लिखा हुआ है कट गया, लार्ज लिखा हुआ है कट गया. ठीक है, आपके पास बचे कितना? 2 ऑप्शन बचे. तो बताओ ये क्वेश्चन आसान नहीं था, 3 तो आपने ऑलरेडी काट दिए. इसका मतलब है यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस, डी एंड ई. अगर आप नहीं जानते हो आंसर, still if you attempt that question, it will be 50% probable that your answer will be right. So this is what I am talking about. This is what I am talking about, that you have to eliminate the wrong answers. Now D और E के बारे में जो आप पढ़ते हो तो it लिखा हुआ है where it will establishing. अब ये बताओ, ये कहीं हमने पढ़ा था कि कंपनी establish its own manufacturing unit? अब कोई अगर बड़ा सा प्लांट है तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकता है. कोई छोटा सा प्लांट है, छोटा बिजनेस कर रहा है, तो वो तो जनरली ट्रेडिंग करेगा, दूसरी जगह से खरीदेगा और उसे यूज करेगा. उसके लिए हर पार्ट खुद से बनाना विल नॉट बी पॉसिबल, राइट?
So answer is D, and that question was easy. And of course, I'm very happy that most of you answered it correctly. Okay, next topic is work study. This is the fourth. हाँ, एक अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था. Let me explain about it. कि what is this keyword? What is keyword? Keyword is simply, आप ऐसा समझो कि एक छोटा सा वर्ड टॉपिक का, जिसको अगर आपने याद रख रखा है ना, तो आपको पूरा टॉपिक याद होगा. ERP के बारे में, if you remember, if you just recall what I told about what I told you about ERP, it is a type of software. इसको हमेशा याद रखना कि it is a type of software. ठीक है. उसके बाद जो भी हमने चीजें पढ़ी, अब जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सो ऑलवेज रिमेंबर वन कीवर्ड, दैट ऑप्टिमम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरीज. ऑप्टिमम वर्ड ऑलवेज रिमेंबर. क्यों, मैंने क्या बताया था कि ज्यादा भी नहीं रख सकते, कम भी नहीं रख सकते. सो दीज आर द कीवर्ड्स, जिसको आप जब नोट्स में लिखोगे ना, तो आपके लिए इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द नोट्स, क्योंकि you just prepare yourself to revise all the things which you study in these 3 months, to revise them in just 1 hour or 2 hour. आप समझो, ये जो 3 महीने आप पढ़ोगे, अल्टीमेटली फाइनल डे के दिन आपको एग्जाम देना है. उस दिन आपने अपने आप को ऐसा होना चाहिए कि मेरे नोट्स इतने छोटे, क्रिस्प एंड कॉन्साइज है कि मैं 1 घंटे के अंदर माइंस एक्ट, CMR या MMR, माइंस रूल, MBTR, रेस्क्यू रूल, पूरा मैनेजमेंट, पूरा जनरल सेफ्टी, पूरा सर्कुलर्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में रिवाइज कर लिया. सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज पूरा मैनेजमेंट पढ़ने के लिए MBA होता है 2 साल के अंदर, पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में है, तो क्या आप MBA थोड़ी करोगे? आप यू कैन नॉट डेडिकेट टू होल इयर्स ना टू जस्ट टू रीड मैनेजमेंट. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू हैव टू मेमोराइज द कीवर्ड्स. Okay, come to the next topic, that is about work study. So again, you have to memorize the keyword. Let's find what is the keyword. The field of finding ways of increasing, the field of finding ways. Okay, this is something about finding different ways of increasing job performance, optimum usage of plant and machinery, standardization of work methods, etc. Therefore, the objective of work study are as follows: scientific and controlled analysis. Scientific and controlled analysis. तो आप एक तरह से समझो कि वर्क स्टडी की, if I talk about work study, if I talk about, लाइन थोड़ी सीधी सीधी नहीं खिंच पा रही है, but anyways, please bear with it. Scientific and control analysis. तो ये वर्ड इस पूरे वर्क स्टडी के लिए, this is the keyword, that work study आप इतना जरूर याद रखना. जैसे वर्क स्टडी क्वेश्चन कुछ भी दिखे ना आपको, आपके दिमाग में ये जरूर आ जाना चाहिए कि साइंटिफिक एंड कंट्रोल्ड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग अवेलेबल मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ टास्क टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स एंड एफर्ट. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, व्हाट इज वर्क स्टडी? वर्क स्टडी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप वर्क को परफॉर्म कर रहे हो, उसको सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते. दिस इज द क्रक्स ऑफ वर्क स्टडी. Okay, what is work study? In just one line, work study is the method of finding to complete a task in most efficient manner. That is work study. इस इतने लाइन को आपने अपने वर्क स्टडी के नोट्स में लिखना है, इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, उससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा. ओके, ऑलराइट. सो दिस आई हैव इंक्लूड द इमेज. आप देख सकते हो व्हाट इज वर्क स्टडी. 2 चीजें हैं, एक तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और दूसरी चीज कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में बनाना चाहिए. दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप चाहते हो, इफ यू वांट, I should try to produce the best quality product. आपका ये है, आपका ये मोटिव है, I should produce the best quality product. अब मान लो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में, जो प्रोडक्ट 1 दिन में बनना चाहिए, आपने 4 दिन लगा दिए. And what is the excuse is that I am producing this product in a most perfect manner. Yes dear, you should produce the product in most perfect manner, but you cannot take 4 days time to produce that product. Otherwise, आप उस तरीके से करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना. If आप ज्यादा समय लगाओगे, आप प्रोडक्शन कम करोगे. अगर प्रोडक्शन कम करोगे, then of course sale will be less, profitability will be less, कंपनी लॉस में जाएगी और अल्टीमेटली कंपनी बंद हो जाएगी. तो इसका मतलब हमेशा याद रखना है. मैंने क्या बोला था पहले, तो वर्क स्टडी के पीछे एक वर्ड आपको अभी तक आपको सिर्फ याद हो जाना चाहिए था. क्या है? साइंटिफिक एंड कंट्रोल्ड एनालिसिस है ये. और दूसरा चीज कि ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में देगा.
ठीक है. It investigates the work done in an organization and it aims to find the most effective way of using industrial resources. Like अब किसी भी चीज का अभी पीछे जस्ट क्या बताया कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बनाना है मिनिमम पॉसिबल टाइम में. ये पॉसिबल कब है? जब आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है. कौन से रिसोर्सेज होते हैं? अब ये छोटी छोटी चीजें हैं. व्हाट आर द रिसोर्सेज? आपके पास मैन पावर है, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है, मशीन है, मनी है. सो दीज ऑल आर योर रिसोर्सेज. सो वर्क स्टडी सिंपल सी चीज क्या है कि साइंटिफिक एनालिसिस है किसी प्रोडक्ट को मिनिमम टाइम में बेस्ट क्वालिटी का कैसे बना. ओके. सो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, दो चीजें है ना. अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में मैंने क्या दिखाया था? देयर आर टू थिंग्स. एक तो क्वालिटी की बात हो रही है, दिस इज देयर मस्ट बी द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड दूसरा बोल रहा है मिनिमम पॉसिबल टाइम. सो इट इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड टाइम. दैट इज व्हाई वर्क स्टडी is divided into two parts. Work study is divided into two parts. First and second. What is the first? It is method study. कैसे कर रहे हैं काम. It is method study. Method study मतलब कैसे कर रहे हैं हम लोग काम. ओके. और दूसरा है वर्क मेजर, टाइम स्टडी, कितने समय में कर रहे हैं. एक तो कैसे कर रहे हैं और दूसरा कितने समय में. ये सब छोटे छोटे कीवर्ड हो गए, बस इसी को कीवर्ड बोलते हैं. कि अपने नोट्स में ना बहुत सारी चीजें, आपको बुक को वापस छापना नहीं है, आपको अपना नोट्स बनाना है छोटे छोटे वर्ड में. तो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट व्हिच इज कॉल्ड टाइम स्टडी. व्हाट इज मेथड स्टडी? टू सिंप्लीफाई जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग वर्क. एंड व्हाट इज वर्क मेजरमेंट? टू डिटरमिन स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशन. कम पैसे में करना है और जल्दी करना है, यही तो अल्टीमेट एम होता है हर बिजनेस का. और ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या देगी? ये सारी चीजें आपको हायर प्रोडक्टिविटी देगी. और ऑफ कोर्स हायर प्रोडक्टिविटी से आपको हायर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और उसके बाद जो भी चीजें होती है वो बाकी चीजें आपको उसके बाद मिलेगी. राइट. सो वापस रिवाइज करते हैं एक बार मैं फिर से. वर्क स्टडी क्या है कि किसी भी काम को सबसे परफेक्ट तरीके से बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, इन सारी चीजों को जब मैं स्टडी करूंगा ना तो वो वर्क स्टडी कर रहा है. हो गया, बस खत्म. दिस इज वर्क स्टडी. ओके. दिस इज द क्वेश्चन. Attempt it and write the answer. What is work study? It is a technique for carrying out study of operations being carried out for saving money. It is a generic term for techniques, particularly motion method study and time study, and defined as analysis of a specific job in an effort to find the most efficient method in terms of time and effort. It is a generic term for establishing a method of work to save time and manpower. It is a generic term for carrying out studies to save material and man hours for affecting cost of the company. Right the answer. Why? Who? I'll kick you. Who is this person? किसने ये यहाँ पे टिक किया? आप अपना चैट बॉक्स में लिखो ना. Everyone is attempting. Okay, great. मुझे पता नहीं था. I now disabled it, so now no one can draw annotation. All right. So a lot of people have answered B, and in fact everyone have answered B. Okay, let's see the answer. It's great to see that all of you are attempting. Very good. This is the right way to learn a topic. Okay, answer is B. And most of you people have answered it correctly. एक और छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ DGMS के एग्जाम का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इस तरीके से मोस्टली आपका मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के लिए या जनरल सेफ्टी के क्वेश्चंस के लिए ये एप्लीकेबल होगा. जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे ना, जिसमें सबसे ज्यादा चीजें लिखी हुई है ऑप्शन में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है कि नहीं मुझे अटेम्प्ट करके जाना है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होगी ना, उस पर आप टिक करके आ सकते. 90% चांस होगा कि वो सही होगा. ठीक है. ऑफ कोर्स ये क्या है? दिस इज एन ऑल्टरनेटिव. इसको प्राइमरी टूल नहीं बनाना है, बट दिस इज एन ऑल्टरनेटिव जहां आपको लग रहा है कि मुझे 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे तभी मैं पास कर पाऊंगा. तो उस जगह पे आप क्या करना, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना उसको टिक कर देना. उस सेंस में अगर मैं इस क्वेश्चन में टिक करना चाहूँ तो मैं क्या टिक करूंगा? उस सेंस में मैं इसको बी टिक कर दूंगा, सबसे बड़ा ऑप्शन है. लेकिन एक्चुअली दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि आप जो मैंने आपको वर्क स्टडी के बारे में बताया वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है. करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक.
and this is very simple definition of management, right? So आपको पता होता है, जैसे अब ये बताओ, now you people when you start studying management, you must remember four different points, right? What are those points? Planning, coordinating, controlling, and organizing. You all remember ना? This is the key word कि आपको जो most important word है वो याद रखना चाहिए. What is management? Management is the administration of an organization. So first of all, this is the important point here. This is the administration of an organization. It is the art and science of managing resources. ये सारी चीजें लिख लो अपने नोट्स में. बस सबसे आसान यही है. Management includes the activities of setting the strategy of an organization and coordinating the efforts of its employees to accomplish its objective through the application of available resources such as financial, natural, technological, and human resources. आप भी ये बताओ, everyone manages his own life, his family life. Everyone manages between the work life and family life. So all those things which even you do in your everyday life is management. So management मतलब क्या हो गया कि आपको सारे resources को use करके बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आप अपना मैक्सिमम रिजल्ट देना चाहते हो. अगर आप फैमिली के लिए कर रहे हो तो फैमिली सबसे ज्यादा खुश रहे. अगर आप कंपनी के लिए कर रहे हो तो कंपनी की तरफ से बेहतर प्रोडक्शन हो, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी. तो यही होता है मैनेजमेंट. ठीक है, ये भी छोटा सा कोट है, आप देख लो. मैनेजमेंट इज एन एफर्ट टू मैनेज ऑल द डिवाइसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स. ऑल द डिवाइसेस मतलब एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. Okay, this is the question which DGMS asks. आप पढ़िए और जवाब दीजिए. Define management. Running of an organization with the sole motive of profitability. The organization and coordination of the activities of a business in order to achieve defined objectives. Then next is the organization and coordination of all activities of a business to achieve high margin of profitability. The organization and coordination of all activities of business in order to achieve high standards of productivity. The organization and coordination of all activities of business in order to achieve company's goals in terms of overseas business. Okay, so इस क्वेश्चन में थोड़े वेरिएबल आंसर मिल रहे हैं. People are answering B, people are answering D, people are also answering E. Okay, let's see the answer. The answer is B, and this is the DGMS answer, right? अब ऐसा क्यों है? आप देखो, आप सिंपल सा you just try to see the first option, the sole motive of profitability. कहीं नहीं बताया हुआ सर. Okay, the organization all activity business to achieve higher margin of. ये profitability का कहीं वर्ड अकेले यूज नहीं किया हुआ है. मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट हर चीजों को मैनेज करता है. The organization in order to achieve high standards of productivity. ये सब क्या है ना कि अलग अलग लिखा हुआ है. प्रॉफिटेबिलिटी स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, प्रोडक्टिविटी स्पेसिफिक हो गया, ओवरसीज बिजनेस मतलब बाहर का बिजनेस, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. So these options are very specific. This is talking about very specific thing. जबकि मैंने मैनेजमेंट क्या बताया? I just told you that management is all about managing all the things in your life, all the things in an organization. That is management. Okay, so let's move to the next question. Otherwise, हम complete नहीं कर पाएंगे. And the next question is conflict management. Conflict management is the process by which disputes are resolved. Okay, बहुत easy topic है. Conflict management is if there are some kind of conflict between two persons. अब important यहाँ पे ये जानना है कि conflict किसके किसके बीच हो सकता है. Conflict can be between two workers. Conflict can be between one worker and his boss. Conflict can be between two different authorities, two different bosses. या फिर एक सबऑर्डिनेट का एक अपने बॉस से हो सकता है. तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन का
अपने अगल बगल की कम्युनिटीज के साथ हो सकता है जहां आप माइंस चला रहे हो, और बगल की जो कम्युनिटीज है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट इनफैक्ट India के political, if you see the political structure of India, we are quasi-federal in nature, so there are conflicts between different states and center. So conflict is a part and parcel of everyone's life. Okay, so how to manage that conflict is the conflict management. So conflict management is the process by which disputes are resolved when negative results are minimized and positive results are prioritized. Conflict management is the practice of being able to identify and handle conflicts sensibly, fairly, and efficiently. Conflict management style includes, okay, so ये तो सबसे लास्ट पे आ गया. आप यहाँ पहले ये तीन चीजों को you can study. That disputes are resolved, then negative results are minimized, not zero, because it is not possible to get zero negative results. So negative results are minimized and positive results are prioritized, and it is the practice of being able to identify and handle conflicts sensibly, fairly, and efficiently. ऐसा नहीं किसी को एक थप्पड़ मार दिया conflict resolve होता है, ऐसा नहीं हो सकता. आपने किसी ने if there is some kind of conflict between two persons, you just suspend those two persons. Okay, so that is not conflict management. So conflict management should be sensible, fair, and efficient. And conflict management, different types of conflict management styles are collaborating, competing, avoiding, accommodating, and compromising. Okay, I'll share the slide so you can read the slide. All right. See, this is the simple question. This is the person who is mediating. This is the person who is mediating to resolve the conflict between two persons. Okay, छोटे-छोटे images. Images increases your memory power, because images, memory by the images is called photographic memory. Okay, so always try, जो topic आपको याद नहीं हो पा रहा है, जो topic आप समझ नहीं पा रहे हो, you just search that keyword in the Google, और Google में सर्च करने के बाद एक वेब होता है जो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं. वहां एक होता है इमेजेस, आप इमेजेस पे क्लिक करो और जो सबसे अच्छी इमेज लगे ना उसको 1 मिनट तक देख करके टॉपिक के बारे में सोच लो. दैट टॉपिक विल बी मेमोराइज. आप उसको हमेशा के लिए याद कर लोगे. ओके, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है which works very efficiently while studying. Okay, all right, so these are the things. Conflict resolution skills. I'm talking about conflict resolution skills. What are those skills? Assertiveness. क्या होता है कि कभी मान लो आपके दो वर्कर्स की लड़ाई होगी, अगर बॉस थोड़ा असर्टिव नहीं होगा, डांटेगा नहीं, तब तक वो रिजॉल्व नहीं. तो असर्टिवनेस मतलब आपको थोड़ी अथॉरिटी दिखानी पड़ती है दोनों को, तो वो क्या असर्टिवनेस. मेडिएशन, दोस्ती करा दी आपने. एम्पैथी व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी मतलब ये होता है कि जैसे आप समझो किसी कंपनी और कम्युनिटी के बीच में, इफ देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कम्युनिटी. ओके, नाउ communities are seriously facing problems due to mining activities going around in that area. So what is empathy? Sympathy word और empathy word में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. Sympathy क्या होता है? आप you understand the word sympathy? Sympathy कि किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो you extend your support to that person. That is sympathy. But what is empathy? Empathy is one level higher than sympathy. Empathy कहने का मतलब है कि जो भी आप डिसीजन लोगे उस डिसीजन में सामने वाले आदमी को जो प्रॉब्लम हुआ है उसको प्रायोरिटाइज करके डिसीजन हो. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. ओके, सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथी एंड एम्पैथी. तो आपको अगर समझना हो आपके लेवल के लिए तो आप सिंपल समझो, सिंपैथी मतलब, एम्पैथी मतलब हो गया सिंपैथी. फैसिलिटेशन मतलब चलो दो लोगों के बीच में बात कराते हैं, देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकल जाए. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई है जिसके ट्रेडिशनल मेथड नहीं है सॉल्व करने के, तो वहां पे आपको कुछ इनोवेटिव तरीका लगाना पड़ेगा. आप डे टू डे अपने लाइफ में यूज करते रहते हो. अकाउंटेबिलिटी आप जान ही रहे हो, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि किसी भी काम के लिए आप अकाउंटेबल हो. ओके, सो दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हिच DGMS आस्क्ड. तो आप आराम से पढ़िए एंड ट्राई टू राइट दैट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? It is a process in which every company builds up large quantity of spares for its use. It is a process in which every company develops a negative point in each hierarchy for their benefit. It is a process of increasing negative aspects of conflict and gain confidence with one group of persons for company's progress. It is a process of limiting the negative aspect of conflict while increasing the positive aspect of conflict. Or conflict management is the process of being able to identify and handle conflicts sensibly, fairly, and efficiently. And last option is, it is the process of limiting the positive aspects of conflict
while increasing the negative aspects of conflict or conflict management so that company can draw benefit and okay. So right answer. So, okay, so question, easy question, and almost all of you have answered it correctly. Well done, excellent, very good. Answer is D. Okay. Come to the next topic, and that topic is production management. So what is production management? Production management is also called operations management. Production management is also called operation. आप सिंपल से समझो, आप छोड़ना ये टॉपिक मत पढ़ो. What is production management? आप जानते हो. What is management? You already know. उन्हीं सारे मैनेजमेंट के स्किल्स को अगर आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करोगे, सो दैट विल बी प्रोडक्शन मैनेजमेंट. उन्हीं सारे स्किल्स को, मैनेजमेंट के स्किल्स को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में लगाओगे, सो दैट विल बी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. उन्हीं सारे मैनेजमेंट के स्किल को अगर आप कंपनी के फाइनेंस को हैंडल करने में लगाओगे, सो दैट विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑल दीस टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, एंड बिलीव मी, if you understand the word, then that topic is very easy and you can very easily answer the question. अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ. ये लास्ट क्वेश्चन था ना, ये लास्ट क्वेश्चन था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का. अब जब आप फाइनल एग्जाम दे रहोगे, पता है मतलब व्हाट हैव हैपेंड विद द कैंडिडेट्स हु वर राइटिंग इन द एग्जाम, कि दे उन्होंने ये क्वेश्चन देखते के साथ छोड़ दिया हो कि कितना बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, इतना समय पढ़ने में समय लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सही करके आया. मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, दे ऑल आर वेरी ब्राउनी पॉइंट, लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर यू. इफ यू रीड द क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट, it is 95% probability that you will answer that questions in a correct way. Okay, so don't skip the large amount of content which is written in the management question. Try to read the whole question, and it is very likely that you will correctly answer the question. Production management is also called operations management, and it means planning and controlling of industrial process to ensure that they move smoothly at required level. In simple terms, production management involves planning, organizing, directing and controlling all activities of production. मैंने आपको यही पॉइंट बताया था प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में कि all the skills of management are used for production, and that is called production management, and that is simply written. Okay, so I have included one diagram here. Production management includes, अब now the question, अब ये simple language में ये तो समझ में आ गया कि production management is basically extending the concept of management to the production process of the industry of the company. Now what all are included in production management? So these all things are included in production management: the design and development of the product, planning and control, implementation of the plan, administration and coordination, get real-time insight, flexible routing and monitoring. ठीक है, व्हाट इज फ्लेक्सिबल राउटिंग? फ्लेक्सिबल राउटिंग मतलब कि अगर किसी चीज को यहाँ के बजाय वहां लगाना हो तो यू हैव ए वेरी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कि एक चीज को दूसरी जगह शिफ्ट कर देना. ठीक है ना, तो ये पूरे प्रोसेस, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन व्हाट हैव बीन आस्क्ड इन द DGMS एग्जाम, एंड दिस इज द क्वेश्चन. रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर. Okay, so most of you people are answering A. Let's see what is the answer for this question. And of course, the answer is A. Question is easy. Lot of people who have not read this question during the exam might have felt after the exam that even if they have read this question, they must have answered it very correct, right? So that is why my very
suggestion to all of you is that when you see some management questions that lot of content are written, please try to read them once. If you read them, you will definitely answer them correctly. All right. So this is the next topic number 8, capital budgeting. Capital budgeting. Now, before capital budgeting, you must understand what is capital and what is budgeting, right? So let's first talk about capital. So what is capital? Capital is basically asset. Read means you just memorize this in these simple words. Capital means asset. जो भी आपके पास asset है ना, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, या आपके पास जो भी tangible, intangible, आपको कुछ knowledge है, आपको कोई अच्छा आपके 10 साल काम करते करते कुछ बढ़िया सा स्किल आ गया है. If you have building, if you have money, if you have car, if you have some knowledge, if you have some expertise, if you have any kind of technical brilliance or excellence in you, all those things are included in capital. Okay, so capital includes not only intangible things but also tangible things. Tangible and intangible. जो चीजें दिख रही है वो भी कैपिटल का पार्ट होगा, जो चीजें नहीं दिख रही है वो भी कैपिटल का पार्ट होगा. That is why these are the examples of capital. Company cars, which is tangible. Stocks, which is tangible. Stock means जो आपने सामान बना कर रख दिया. Machinery, which are tangible. Patent, this is not tangible, this is intangible, but this is the capital of company. Software, it is intangible. Bonds, this is intangible. Okay, so all these are examples of capital. So you understood what is capital. Now what is budgeting? आप simple सा, every one of you think about the budget. आपको सैलरी मिलती है मंथ के एंड में, आप एक प्लानिंग करते हो ना, you just plan how to spend that money, how to save some out of that money. All of us plan this in everyday life. That is called. तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आप एक बजट बनाते हो कि हाँ मेरे घर के खर्चे में इतना पैसा होगा, मेरे घर के खर्चे में इतना पैसा खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई में इतना होगा, मेडिकल की थोड़ी इतने की जरूरत हो सकती है, मुझे इतनी सेविंग करनी है. तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं पूरी सैलरी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. दैट इज बेसिकली मेकिंग बजट ऑफ योर पर्सनल लाइफ. ओके, सो व्हेन यू include all these type of thinking, of all these type of allocation of resources, of all the capital available in your company, then that process is called capital budgeting. So capital budgeting simple terms में आपको बताऊं तो बस ये बताऊं कि जो भी कंपनी के कैपिटल है, जो भी कंपनी के असेट है, उन सारे असेट को कहां पे कब यूज करना है ताकि कंपनी सस्टेन करे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग. मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं. कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनी टू इवैल्यूएट मेजर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट such as new plant or equipment. The process involves analyzing a project's cash inflows and outflows. अब वही बोला ना, सैलरी आपके पास इनफ्लो है और आपके जो खर्चे है वो आपका आउटफ्लो है. That is why budgeting process must involve cash inflow and outflow to determine whether the expected return meets a set benchmark. Many formal methods are used in capital budgeting. These techniques include like accounting rate of return, payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, all these things which are used in the process of capital budgeting. Okay, so this is all about capital budgeting. आपको मैंने समझा दिया कंपनी सिंपल लैंग्वेज में कि all the assets of the company are used in a judicious manner. You have to prepare a budget कि कितने पैसे मैं लगा रहा हूँ, कितने दिन में आएगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा. अब मैं कुछ ऐसा काम करूं, मान लो फॉर एग्जांपल माय मंथली एक्सपेंसेस इज से 30,000 रुपीज. अब अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे 20,000 सैलरी मिलेगी, तो क्या कभी मैं सस्टेन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा. लेकिन अगर कोई मैं ऐसा काम करूं जिसमें माई सैलरी इज 40,000 रुपीज, तब मुझे वहां पे थोड़ा सेविंग हो पाएगा. तो ये सारी चीजें आपको कंपनी के अंदर भी प्लान करना होता है. मान लो कोई एक माइंस है, माइंस के अंदर का डेली का प्रोडक्शन सपोज x टन, ठीक है, तो आप सोचोगे ना कि x टन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे इस मशीनरी को यूज करना है. अब आपने क्या किया, इतनी छोटी मशीनरी लेके आ गए जो प्रोडक्शन में हेल्प ही नहीं कर रहा है. या आपने क्या किया
कितनी बड़ी मशीनरी लेके आ गए जो x के बजाय 100x प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन आपका माइन ही बहुत छोटा है, x प्रोड्यूस होने लायक है, तो इसका मतलब वो भी वेस्टेज ऑफ मनी हो गया ना। तो इस तरीके से कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल डिफरेंट जो आपकी कंपनीज के अंदर अवेलेबल होते हैं उसका एलोकेशन कैसे करना, उसका राशनिंग कैसे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, I have included this picture. Step 1 is identify investment opportunities, collect information, data and financial information, decide whether the investment is good business move, सही है जो आप कर रहे हो, सही कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो, prepare necessary finances for the investment, implement new program of investment, then monitor progress and review success of the program. ये सारी चीजों को ना आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करो, you will easily understand what I am talking about. ओके कि पूरे लाइफ के अंदर कहाँ आपको काम करना है, कितने पैसे मिलेंगे, कितना पैसा मेरा खर्च होगा, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, नेसेसरी फाइनेंस फॉर द मतलब अब उस काम को करने के लिए अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना है पैसे कहाँ से आएंगे, इंप्लीमेंट न्यू बिजनेस प्रोग्राम, अब पैसे आ गए, सारी चीजें हो गई, मैंने बिजनेस प्लान को इंप्लीमेंट किया और अल्टीमेटली उसके प्रोग्रेस को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग. नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच DGMS have asked, so read the question and answer. Okay, take your sweet time, read the question and then answer. What is capital budgeting? It is a management technique in which each company spends large amount of money for welfare of their employees. It is a management technique in which each company sends their employees in offices for overseas training to increase their loyalness. It is a management technique in which each company invests large amount of money for producing machinery and plant for their enterprise. The process in which a business determines whether projects such as building or a new plant or investing in a long-term venture are worth pursuing. Management of business or industry by carrying out scientific studies and implementing the same for increasing their production and productivity. Okay, so people have answered D, people have answered E, and in fact, almost 50%. 50% no, D, a lot of people have answered D. E भी काफी लोगों ने आंसर किया है. Okay, let's see the official answer. What is the official answer of DGMS? And that is D, not E. Okay, not E. देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला तो मैंने पहले ही काट दिया, लार्ज अमाउंट की कहीं बात ही नहीं है. लार्ज अमाउंट क्यों, छोटा बिजनेस है तो बहुत ज्यादा पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगा, तो ऐसा तो कैपिटल बजटिंग हो ही नहीं सकता है. और उसके बाद ये भी लिख रखा है ना, वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज, ऐसा तो कहीं स्पेसिफिक हमने बात नहीं किया कि भाई स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए था. ओवरसीज ट्रेनिंग का भी ऐसा कोई बात नहीं था. अब देख रहे हो DGMS जब क्वेश्चन पूछ रही है कुछ लाइंस को दे आर यूजिंग इट वेरी फ्रीक्वेंट. ओवरसीज लास्ट क्वेश्चन एक जगह पे उन्होंने यूज किया हुआ था ओवरसीज बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अब यहाँ पे फिर ओवरसीज के बारे में लिख रखा है. इट इज अ मैनेजमेंट इन व्हिच ईच कंपनी इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. फिर से लार्ज, लार्ज क्यों करना है, पैसे ही नहीं होंगे तो लार्ज खर्च कैसे करेंगे, तो लार्ज तो काट ही दो, बच गया. अल्टीमेटली 3 आपने एलिमिनेट कर दिए कि ये तो गलत होगा, तो इसका मतलब आप अल्टीमेटली आ गए कहाँ पे, आप आ गए डी और ई पे. नाउ डी और ई को आप ध्यान से पढ़ो, एटलीस्ट इतना तो श्योर हो गया ना कि अगर आप ट्राई करोगे तो 50-50% तो आपके सही होने का चांस है. तो डी और सी ई में कोई एक आंसर करना है. अगर आप डी और ई को ध्यान से पढ़ो, ये बहुत स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडीज के बारे में बात कर रहा है. और जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे तो बिल्डिंग प्लांट की सारी चीजें आपकी यूज हो रही थी. इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म वेंचर और वर्थ परसुइंग. Always try to find out extreme word and general word. Okay, this is one very important trick I am telling you about the objective papers. Try to find out extreme word. What are extreme word? बहुत बड़ा है, कोई चीज बहुत छोटी है, ये पूरा निगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है. These are all very specific point. Extreme word. लार्ज, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है. और कभी भी आंसर ना जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे होंगे ना वो आंसर नहीं होगा. लार्ज अगर आपने पढ़ लिया ना, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मत पढ़ो. हालांकि सजेस्ट करूंगा आपको पढ़ना चाहिए, बट ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड आ गए ना, जिसमें बहुत एक्सट्रीम वर्ड आ गए उसको आपको नहीं करना. तो आपके पास जब डी और ई बचा था, दिस स्टेटमेंट लुक्स मोर जनरल एंड दिस स्टेटमेंट लुक्स मोर स्पेसिफिक. तो इसमें अब कैपिटल बजट पूछ भी तो आपसे कैपिटल बजटिंग रहा है,
कैपिटल बजटिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, दैट सेल्फ इज अ जनरल टर्म। अगर क्योंकि कैपिटल बजटिंग के अंदर हम 4 चीजें 5 चीजें 6 चीजें 7 चीजें पढ़ेंगे, आईआरआर पूछे तो स्पेसिफिक हो गया, एनपीवी पूछे स्पेसिफिक हो गया, लेकिन जब आपसे कैपिटल बजटिंग पूछ रहा है तो ये तो थोड़ा जनरल ही होगा ना एज कंपेयर टू आईआरआर, एनपीवी एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पेबैक पीरियड आपको पहला टॉपिक बताया था ना, पेबैक पीरियड से रिलेटेड। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ए मेट्रिक यूज्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, to estimate the profitability of potential investment. This word is very very important here. Potential investment और investment में क्या फर्क? Potential investment कहने का मतलब ये है कि अभी इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, उसकी प्लानिंग चल रही है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जिसका ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्लानिंग स्टेज में आता है इन द पिक्चर टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हम अपने बिजनेस के ऊपर करेंगे। ओके, वेरी क्लियर। IRR is a discount rate. Now this is the specific definition of this topic. IRR is a discount rate that makes the net present value of all cash flows equal to zero in a discounted cash flow analysis. तो अगर आपको सिंपल सा एक वर्ड बताऊं जो अगर आप याद रखोगे तो आप सही कर लोगे आंसर एनपीवी का, कि मतलब आईआरआर का। आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। IRR is a rate of return, is a discount rate where NPV comes zero. IRR is a rate of interest that makes the sum of all cash flow equal to zero and is useful to compare one investment to another investment. Okay, मैंने सिर्फ, आप देखो मतलब नोट्स, अगर नोट्स की अगर आप बात करो तो ऑलरेडी आई हैव यूज्ड ओनली very few lines internal rate of return. I have used only 4 lines, and believe me, if you get a question on internal rate of return by reading all these 4 lines, you will definitely answer that question correctly. Okay, so internal rate of return is a metric used in financial analysis to estimate the profitability of potential investment. It is a discount rate that makes NPV of all cash flows equal to zero in a discounted cash flow analysis. It is a rate of interest that makes the sum of all cash flow equal to zero and is useful to compare one investment to other. हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़िया होगा, तो ये सारा चीज आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर आता है। 2 बार 4 बार इसी स्लाइड को आप पढ़ लेना, बहुत आराम से याद, बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं। क्लियर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का दिस इज द स्पेसिफिक फार्मूला। ऑफ कोर्स यू विल नॉट रिक्वायर अगर आता भी है तो मुझे लगता है इस तरह क्वेश्चंस, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं इस तरह की चीजों के ऊपर, हम व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे, बट ठीक है, आप पढ़ाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच DGMS have asked. Read the question and answer. Okay, take your time, don't worry, we are not in a hurry, we are not in a race. आप आराम से पढ़ो, सही करो। अगर आप यहाँ सही करोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, एंड ऑफ कोर्स फाइनल एग्जाम में भी आप सही करोगे। ठीक है, रेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। आप अगर आपको देना हो जवाब आप लिख दीजिए, सर प्लीज वेट, मैं देना चाहता हूँ, मैं फिर भी वेट करूंगा। ओके, सो रीड इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर।
All right, so a lot of people have answered, and answer is mostly A. Let me see. ठीक है, सबने आंसर ए दिया है। और एक ये भी रिक्वेस्ट है, हालांकि आपको टॉपिक नंबर 9 वी हैव ऑलरेडी दिस, वी आर कवरिंग 10 टॉपिक्स टुडे। Okay, all of you have answered A. Let's see the answer. Answer is also A. So I must believe that you have understood this topic. Okay, so we proceed to the next topic, which is the last topic for today, and the topic is material management. All right, so we have studied inventory management today, capital budgeting, internal rate of return, and all those things. This is the last topic for today, and that is material management. What is material management? Material management is the process of planning and controlling material flows. Material management is a core function of supply chain management. Always remember, supply chain management. This is one keyword here, that material management is related to supply chain management, involving the planning and execution of supply chains to meet the material requirement of a company or organization. These requirements include controlling and regulating the flow of material while simultaneously accessing variables like demand, price, availability, quality, delivery schedules. बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लिख रखी है, कुछ नहीं, आपको एक बार इसको सबको पढ़ लेना, ठीक है। इमेज अब ये देखो, अब यहाँ से आपके लिए ज्यादा आसान होगा, पीछे की चीजों को हम दोबारा पढ़ें। व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट? मटेरियल मैनेजमेंट अगर आप देखो तो इस सिंपल सी डायग्राम ये दिखाया जा रहा है कि परचेजिंग से लेकर के कंजम्पशन या एंड यूज तक जो भी पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस इज मटेरियल मैनेजमेंट। व्हाट इज मटेरियल? यू ऑल नो। मटेरियल मतलब कोई भी चीज जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के पार्ट को, जो भी मटेरियल आप अपने बिजनेस के लिए, एनी काइंड ऑफ मटेरियल which you are using in your business, the whole process starting from purchase to ultimately consumption is called material management. Okay, क्या what all those things are included? Purchasing is there, receiving is there, quality control, inventory control. तो inventory control जो हम ABC analysis या XYZ analysis, all those topics which we study are part of material management. Okay, always remember, inventory control is a part of material management. So material management is an umbrella, उसके अंदर छोटे points. Okay, so inventory control, warehousing and storage, issuing and distribution, consumption and end use. And you see छोटी चीजें यहाँ भी लिखी हुई है, planning, receiving के पहले क्या है, delivery, validation, acceptance. देखो इन सारे, I don't expect a question on all these small topics. ये छोटी चीजें के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो DGMS ने पूछे हैं, believe me, in the next exam also we shall discuss total 100 questions. In next exam also, if DGMS asks suppose 15 questions from management, at least 50% questions, means at least 7 or 8 questions will be from these 100 questions we are going to discuss here. Okay, mark my word, write it somewhere कि अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कल को अगर DGMS 15 क्वेश्चन पूछता है ना, 7 या 8 क्वेश्चन डेफिनेटली इसी से रहेंगे, और आप ना उसी 7-8 को करके जाना, उससे ज्यादा आज आप यू ट्राई टू वॉच दीज वीडियोस, उसके बाद आप मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता, आप डेफिनेटली पास करोगे, ये मेरा चैलेंज है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट। फिर से, if you can read the text, material management is the process of planning and controlling material flows. Material management is a core function of supply chain management, involving the planning and execution of supply chains to meet the material requirement of company or organization. These requirements include controlling and regulating the flow of material while simultaneously assessing variables like demand, price, availability, quality, and delivery schedules. Okay, so this is the last question for the day. Read the question and then try to answer. What is material management? A, scientific technique for procuring material for day-to-day activities. B, procurement of material at lower cost. C, procurement of material from international market. D, scientific technique concerned with planning, organizing, and controlling flow of material from their purchase to end user. E, procurement of material from local. Now I think जितना मैंने आपको जो कंटेंट बताया पीछे की चीजों में, 2 स्लाइड्स में,
ये क्वेश्चन तो इजी है ही है। मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आप देखोगे जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो डीजीएमएस पूछ सकता है, यू शैल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। जो लास्ट की 2 स्लाइड मैंने बताई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट? It is scientific technique for, I have already spelled the options, and it is better, it is good to see that all of you people, most of you people have answered D, and of course now majority will win. Answer is of course D. So very good that you all of you people answered correctly. All right, so this is I think it for today. We discussed 10 topics here, 10 questions and related topics, small topics. This was not regular management class. I just tried to tell you the important points related to all these questions. Now, these questions have already been asked in DGMS exam. There is high probability that some of these questions will be repeating in the exam. So, my sincere suggestion कि हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, कुछ 1-2 लेक्चर फ्री के होंगे, बाकी सारे सब्सक्राइब यूजर्स के लिए होंगे ऑनलाइन एग्जाम के। तो आप इस तरह के वीडियो को देख लीजिए। 100 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि 100 के बाहर 101 बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, and you all participated in the lectures very efficiently, and I am glad, I am happy to see you all. Well done. पढ़ते रहिए आप लोग, और एग्जाम बहुत आसान है, आप आराम से पास कर जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट।